हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है मिस्टर भेनुगोपालन जी, आप सब अच्छे से उनको जानते हैं। ही इज़ ए ग्रेट फाइटर फॉर पेंशन अपडेशन एंड अदर इशू। सेकंड ऑप्शन के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, सेकंड पेंशन अपडेशन के लिए। उन्होंने और एक वेल ड्राफ्टेड वेल रिटन लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखे हैं। क्या लिखे हैं डिटेल में, उसके बारे में आज का वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैंक पेंशन अपडेशन, मिस्टर सी एन वेणुगोपालन, ए वेल रिटन लेटर टू पीएम ऑन पेंशन अपडेशन। ये देखिए वेणुगोपालन जी का लेटर डेटेड 27 जून 2026। श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर दिल्ली। Most respected Prime Minister, PTI reported today that on 25th June 2026, Your Honor was pleased to express your anguish over direct assault on the Constitution caused by the emergency, the darkest chapter in Indian history, imposing curbs on freedom of expression and assaults on institutions that are the bedrock of Indian democracy. उसके बाद वो क्या लिखें? I may kindly be permitted to bring to your kind information that though an infinite quantity of water has flowed through the Ganga over a period spanning more than half a century post emergency, the requisite correction has not been made by the arms of the present government. Department of Financial Service under the Ministry of Finance, the DFS. The DFS has given previous sanction to the pension regulation of various nationalized banks and notified them in the Gazette of India after adopting by their board of directors, making them statutory. The same DFS is causing the banks that are the bedrock of Indian democracy to trample upon the regulation to DFS itself had put in place in the banks after following the due procedure in law and not updating the pension of retired bank employees in gross breach of the settlement and regulation in force. वो बोले DFS का गलती है। वो लोग गैजेट पब्लिकेशन किए हैं, पेंशन अपडेशन के बारे में साइन किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन पेंशन अपडेशन नहीं करा रहे हैं। सरासर ये डीएफएस का गलती है। द एक्ट इज आउटरेजियसली क्रूएल एंड डेमोनिक एज द डीएफएस इज डिनाइंग द अपडेटिंग ऑफ पेंशन विच इज पेबल आउट ऑफ द मनी and deferred wages of the employees and pensioners held in the pension fund of bank. जो पेंशन अपडेशन होगा उसको कवर करने के लिए पेंशन फंड सफिशियंट है। द नंबर ऑफ victims is nearly 8 lakhs and about 2 lakhs have already left to their heavenly abode in pathetic state without getting their statutorily sanctioned pension when their own money was unsafely detained in the pension fund by the banks that are institution of heritage in the democratic nation. The pension is the Reserve Bank of the pension in the Reserve Bank of India was updated with effect from 1st March 2019 by various factors depending on the date of retirement of the employees, corroborating that similar updating was to be done in the nationalized bank also, but DFS did not update it. द नेशनलाइज्ड बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक में पेंशन अपडेशन होना चाहिए था, आरबीआई का हुआ, लेकिन अभी तक डीएफएस ने किया नहीं पेंशन अपडेशन इन नेशनलाइज्ड बैंक. द इंडस्ट्रीज वाइड सेटलमेंट डेटेड 29/10/1993 between Indian Bank Association and AIBA assured that the pension scheme in nationalized banks shall be exactly on the line of the pension scheme in RBI. Regulation 56 of the pension regulation lays down that in case of any doubt in the matter of applicability of the regulation, regards may be had
to the corresponding provision of central civil pension rules, making the pension regulation in the nationalized banks exactly similar to central civil pension rules. It therefore became imperative that pension in the banks shall be updated simultaneously with the revision arising out of each bipartite settlement. In the same way, central civil pension get revised along with the implementation of each पे कमीशन. सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे सब हर पे कमीशन में पेंशन अपडेशन है, उसी तरह बैंक में भी पेंशन अपडेशन होता है, होना चाहिए. आरबीआई में ये हो रहा है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में अभी तक नहीं हो रहा है. The DFS has paid pension in the regional rural bank with effect from 1st November 1993 on the basis of the settlement dated 29/10/1993, which was in respect of nationalized bank, showing that the settlement is valid and in the force, and the updating of pension as outlined in clause 12 of the settlement has to be done invariably in the nationalized bank. जो पेंशन रेगुलेशन 1993 के बेसिस में, सेटलमेंट के बेसिस में आरआरबी का आप पेंशन अपडेशन किए, मतलब 1993 का पेंशन सेटलमेंट वैलिड है, तो उसके आधार पर पेंशन अपडेशन भी है, वो भी आपको करना चाहिए. द रूलिंग डेटेड 1st July 2015 of the Honorable Supreme Court in Civil Appeal number 1123 of 2015 versus State of Rajasthan and versus Mahendranath Sharma lays down that the consolidated pension shall not be less than 50% of the running pay band corresponding to the pre-revised scale of pay, making it essential that pension in the banks and also be updated in accordance with the regulation 35(1) of the pension regulation, which lays down that basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated as per the formula given in अपेंडिक्स 1. और जो फार्मूला दिया उसको अपडेट किए नहीं, हर सेटलमेंट में अपडेट होना चाहिए, और उसी हिसाब से हर सेटलमेंट में पेंशन अपडेशन भी होना चाहिए. पेंशन फंड ऑफ स्टेट रन बैंक्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया stood at 4,27,000 crores on 31/3/2024 and 4,56,000 crores in 31/3/2026 and rupees 4,86,000 crores as on 31/3/2026, with consistent growth year after year, and all the banks can pay the updated pension out of the annual growth of the pension fund without touching the corpus of the fund. आराम से जो ग्रोथ होता है, जो इनकम आता है फंड, उसी में पेंशन अपडेशन हो जाएगा, मेन फंड को टच करना नहीं पड़ेगा. द पेंशन फंड कंप्राइज द CPF of employees, and as such it is not the money of the bank, and the payment of updated pension is out of the money of the employees. एम्प्लॉइज़ का जो पैसा है उसी से पेंशन अपडेशन होगा, गवर्नमेंट को, बैंक को, किसी को देना नहीं पड़ेगा. Not updating the pension therefore is a robbery of the pensioners who sacrificed their entire career for nation building by the heritage institutions of Indian democracy. The DFS has also revised the pension in award and also in general insurance companies where employees need to work for 5 days a week in leisurely atmosphere. Sans any financial risk without updating the pension in the nationalized bank where employees toil hard for 6 days a week and beyond in toxic state and facing financial risk in each and every transaction. The DFS is citing a lame reason for not updating pension that the issue is sub judice, when the sub judice nature does not hinder it. This action represents a significant challenge to the democratic principle of our nation and raise concern about authorization tendency. I respectfully request that the Honorable Prime Minister kindly consider instructing the DFS, may be pleased to the DFS to expedite the update of pension in the nationalized bank
टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो लास्ट में रिक्वेस्ट किए हैं पीएम को कि डीएफएस को इंस्ट्रक्ट कीजिए और बैंक का पेंशन अपडेशन करा दीजिए। विथ रेस्पेक्टफुली रिगार्ड्स, आई रिमेन योर्स फेथफुली मिस्टर CN वेणुगोपालन। बहुत अच्छा लेटर लिखें। नो डाउट रिप्लाई आता नहीं कोई भी ये का, लेकिन हमको कोशिश तो जारी करना चाहिए। और ये वेल ड्राफ्टेड लेटर है। और हमारा पेंशन अपडेशन का केस 22 जुलाई को हियरिंग है। तब तक देखते हैं क्या होता है 22 जुलाई को। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमीय कुमार मिश्रा, थैंक यू।